Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well, preparing with your full gist and enthusiasm for the upcoming prelims examination. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 27th of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. The relevance of the news is specifically for the civil services examination, state public service commission examination, and many other examination, one-day examination conducted by various state and the union agencies. Through this video session, we'll see the detailed analysis of the news so that it become relevant for your examination. So without any further ado, let's get started. First, I'll give you the highlights of the news, then we'll proceed further with a detailed discussion. So the highlights starts. The first news, that is the President of India called for all India judicial service. This is not for the first time. The President of India has reiterated the demand which has been long pending. The second important news talks about the World Climate Action Summit. The Prime Minister of India is going to participate in the summit, which is again COP28 summit. The other news, that is with regards to the respiratory illness, we have seen the surge of the cases of pneumonia in China. In that concern, the government of India has asked each and every state to take the preventive and precautionary measures. The other news is about China, Japan and South Korea. They have come up with the trilateral ties to boost up and even to reduce the part of tension coming among the member countries. And we'll conclude this session with editorial that talks about fleet electrifications to tackle the urban population, how the part of electrifications, the EVs, can help in reductions of the total pollutions that has been emitted and reduced in the car. We'll see the detail and dive down into the editorial. Now let's get started with the detailed analysis of the news one by one. So the first news is the President called for all India judicial services. This is something which has been long in demand. और इसकी डिमांड अगर आप ट्रैक करें, दिस वाज एक्चुअली दिस इज इन द लाइमलाइट, मेन लाइमलाइट सिंस 2012 एंड इवन द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1960. अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1960 itself has called for something for the establishment of all India judicial services. Now, President of India, while making the inaugural session of the Constitution Day in the Supreme Court premises, the President has categorically said that there is a dire need to come up with all India judicial services, something very important that will shape Indian judiciary. जिस तरह से all India services है, specifically all India services में तीन services हैं जो आती हैं, that is the Indian Administrative Service, that is Indian IES, then we have IPS, Indian Police Services and Indian Forest Services. ये तीन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में है, बाकी सारी अलाइड और ग्रुप ए सर्विसेज में आती है. नाउ द प्रेसिडेंट हैज सेड दैट देयर शुड बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू आके सोसाइटी इन लार्ज को सर्व करें. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड question in all India judicial services examination. Now once again it is there in the limelight, so you need to know the basic details about AIJs. So it called for citizen centric approach. The president, while making an address, has said that they need to have a citizen centric approach. We call it double C approach, right? That will help to improve to access to justice. Justice to who? Justice to common men, justice to the people who are unable to get access to the part of judiciary to the larger extent, and even they are actually वो उनको खास करके बात करें जो जुडिशरी की जो बेनिफिट्स हैं उससे वो वंचित रह पाते हैं, they are being exempted on that category, right? And the President of India said that we need to decolonize, that could be set up with a conscious effort. The President has also noted कि ज़रूरी है जो judicial services है, और खास करके अगर जुडिशरी की बात करें, we need to ensure that justice is the one, liberty and equality. This should be actually the core idea behind conducting the part of judicial, even when it comes to the decision, even it comes to the part of judicial preparation, these are the things that should be the main and important component. Now this has valued with our independence, and this is no wonder that we find mentions in the preamble continue to guide the nation for the building efforts. So अगर आप प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल में कैटेगोरिकली सारी चीज़ों की बात की गई है, सोशलिस्ट, सेकुलर, लिबरल, जस्टिस, इक्वालिटी, everything has been categorically mentioned with his context so that people
and even the authority who is actually enforcing the laws should understand that it should help the community to a larger extent. Now, All India Judicial Services की अगर बात करें, as the news is about AIGS and President has taken a note of this, तो All India Judicial Services की अगर बात करें, this aims to reform and centralize the recruitment of judges. As I've told you, like All India Services जिस तरह से है, उस तरह से ही All India Judicial Services भी होंगी, जहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो DR के थ्रू होगी. What does the DR mean? DR stand for direct recruitment, right? नाउ इट वुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल तक भी अपॉइंटमेंट की जाएगी. लाइक इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. द सेम विल गो फॉर द जुडिशरी. द आइडिया फॉर लाइक अगर बात करें AIGS की, तो सबसे पहले कही गई थी by the report on the judicial administration. This was given by the Law Commission of India in 1958. इनिशियली मैंने आपको सेशन स्टार्ट में ही बताया था 1960s में इसके लिए इनिशिएशन हो चुकी थी. द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इज द पार्ट टू स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन आवर कंट्री. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, सम फैक्ट्स नीड टू बी नोन टू यू कि इसकी ज़रूरतें क्यों है, कितनी केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम. Now, if you look at the backlog cases which is there, I mean this data is increasing day by day, but as of now we have a record of 21 lakh cases that is pending across for more than 10 years. 15 lakh cases ऐसे हैं उसमें criminal cases हैं, right? Disposable rate of the High Court has been slipped negatively और ये -3% के आसपास है. The cases disposed of by the subordinate court is 1.81 crore in 2012, which went up to 1.90 crore in 2014 और वो फिर आगे बढ़ करके 4.5% पे डेटा आई है. द टोटल पेंडेंसी केसेस इन ऑल कोर्ट, आई मीन जितनी भी लोअर कोर्ट्स की बात करें, 3.07 करोड़ से 2015 के. दीज आर द ओल्ड डेटा, बट एज ऑफ नाउ अगर करंट डेटा की बात करें, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा, जो करंट वैल्यू होगी, जो नंबर्स होगी, वो ज़्यादा ही होगी. ऑल्दो इन द रिसेंट टाइम, अगर रिसेंट टाइम में बात करें, कोर्ट हैज़ कम अप विद मोर इनोवेटिव अप्रोच, चाहे वो ऑनलाइन हियरिंग की बात हो. ड्यूरिंग कोविड-19 वी हैव सीन ऑनलाइन हियरिंग, ई कोर्ट की फंक्शनिंग्स भी बढ़ी हैं, बट अगेन जितने बैकलॉग के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई है. दैट इज़ अ रीज़न इफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज विल बी देयर विल बी अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्डर विच विल बी कमिंग, राइट? सो दिस कार्डर विल एक्चुअली सर्व द ह्यूमैनिटी इन लार्ज. Now, constitutional provisions की अगर बात करें, we have Article 312. This is again important. Article 312 is the specific article that call for the establishment of all India judicial services. कई one day examination में इस तरह के point relevant हैं. The constitutional provisions enables the creation for AIGS at district level. जो district judges level ही होती है, जिसे DJ level भी कहते हैं. No, in high court or basically in the subordinate court or the sessions court, this is a term which is commonly used, teach. Now, All India Judicial Services was first mooted by the Law Commissions in 1950, और ये आप 1960-1950s की बात कर सकते हैं. The 50 means 1958 is the exact date, right? Article 223 and Article 224 of the Constitutions deal with the appointment of district judges, places with the domain with the state, right? 312 में provisions की बात की गई है. 312 is a provision for AIJS, और Article 223, 233 और 234 is something that is dealing with the part of appointment and the domain of the state. So these are some of the provisions which is important for the examination. Now, क्या significance होगी अगर बात करें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की? हम प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट द AIGS, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है सोसाइटी में, किस तरह से हेल्प करेगी? फर्स्ट, इट विल कॉल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द लोअर जुडिशरी. लोअर जुडिशरी का मतलब है जो सेशंस कोर्ट है, राइट? द सेशन कोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज फास्ट ट्रैक कोर्ट. सेशन कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे उनमें और भी ऐसे जो लोअर हायरार्की के कोर्ट्स हैं उनमें भी मदद मिलेगी. Resolving the structural issues like disparity in the pay, compensation among the different states. This is the second significance. The third would be expedite the entire process of vacant positions. जो कोर्ट में जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी जो कमी है वो पूरी की जा सकती है. एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द स्टेट. अभी हर स्टेट्स की अलग अलग वेरिएशन है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड में. नाउ दिस विल बी यूनिफॉर्म. सो दीज आर द four important advantages or significance of having all India judicial services. Now moving ahead, Prime Minister to attend the World
Climate Action Summit. So this will be something which will be a follow up to the COP28. COP28 से पहले आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ अ प्रिपरेटरी फेज या COP28 की वर्जन क्लाइमेट एक्शन समिट के तौर पे की जा रही है, जहाँ पे एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी पार्टिसिपेटिंग. दिस इज बीइंग होस्टेड बाय यूएई, जिसकी प्रेसिडेंसी है COP28 के लिए. Now, UNFCC और कोप की बात करें, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCC के इनिशिएटिव्स है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रोवाइड फॉर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज पे बात की जाती है एंड हाउ द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट शुड बी प्रमोटेड. दैट इज अ मेन डिस्कशन एजेंडा. नाउ COP26 में ऑलरेडी पंचामृत की बात की थी इंडिया ने, जहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट टारगेट्स बताए गए थे. आई टेल यू ईच टारगेट वन बाय वन इन अ वाइल. Now, the Prime Minister has also announced that Mission Lifestyle, जैसे लाइफ भी कहते हैं, उसके थ्रू किस तरह से जो सस्टेनेबल लाइफ है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए कोशिश करने की बात की है. The climate change has been an important priority area for G20 presidency and it has captured the New Delhi Leader Declaration, जो कि अभी G20 में हुई थी. वहाँ पे न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, जहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ इश्यूज पे डिस्कशन हुई, राइट. एंड इंडिया has categorically put its best possible impetus to ensure that we are working towards a climate resilient economy and infrastructures. Now, पंचामृत की अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडिया ने क्या क्या टारगेट्स में रखी हैं, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द COP26 विच इंडिया हैज एक्चुअली सेट. सो यहाँ पे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी से बात की है 2030 तक के लिए इंडिया की. दीज आर द टारगेट्स विच इंडिया हैज एक्चुअली सेट. 50% of the renewable energy by 2030, reduce the carbon emissions by 1 billion ton by 2030, reduce the carbon intensity by over 45% by 2030 और net zero emissions की बात करें, net zero emissions by 2070. So these are the target. और अगर COP27 की बात करें specifically, when you look at the COP27 की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर की थी, बिकॉज यहाँ पे loss and damage fund which was actually created and it has helped a lot. It will help a lot. अभी भी कॉर्पस को लेकर के कोई फाइनल क्लैरिटी नहीं है, बट अगेन दिस हैज बीन इनिशिएटेड. इसके फॉलो अप में जो COP28 में अभी रिसेंट में यूएई में होनी है, उस पर भी इस पर खासा जिक्र किया जाएगा एंड इवन द इम्पेटस विल बी मोर टूवर्ड्स द क्लाइमेट फाइनेंस. So now look at the roadmap that these countries have actually come up with. So the meeting for the first time in the 4 year, ये meeting तीनों countries के बीच में कुछ पिछले 4 सालों से रुकी हुई थी, which has been started and resumed now. And top diplomats from South Korea and Japan is the other country, and China, they have come up together to ensure that they are working in right direction and they are coming with the resolutions towards the trilateral summit. सारे कंट्रीज ने इकोनॉमिकली कल्चरली टाइप करने की कोशिश की है. दीज कंट्री टुगेदर अकाउंट फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो 3 कंट्रीज मिलके 25% ऑफ GDP एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं. दीज ऑल हैव एग्रीड टू पुश डाइवर्स कॉपरेशंस इन द प्रोजेक्ट which include people to people connect. Then we have trade as an important component, technology, public health, sustainable development and security. तो ये 3 कंट्रीज इन एरिया को प्रायोरिटाइज करेगी और इन पे एग्रीमेंट्स और MOUs भी साइन करेगी. Now moving ahead with the editorial for the day that talks about the fleet electrifications to tackle the urban pollutions. We have seen जो pollutions level है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, नॉट ओनली एट इंडिया लेवल एंड ऑल्सो एट द ग्लोबल लेवल. इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है अपकमिंग COP28 summit. So what I'll be discussing under this article, first we'll see the increase in the truck fleet which has been there in India. इंडिया में किस तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेल फ्लीट ट्रांसपोर्ट भी काम कर सकती है और उसकी क्या पोटेंशियल है. विल नीड टू सी हाउ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड एट द नीड ऑफ द आवर एंड द कंक्लूजन पार्ट. नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, एज मेनी एज सिटीज दैट हैज बीन विटनेसिंग द पार्ट ऑफ सर्ज इन द रेड जोन. बहुत सारे इंडिया की सिर्फ सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो रेड जोन के अंदर है और वहाँ पे पार्टिकुलर मैटर की ओवरऑल जो टोटल एक्यूमुलेशन है वो हाई है एंड द एयर क्वालिटी हैज़ बिकम पुअर एंड इवन वर्स्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. मिलियंस ऑफ पीपल हैज़ हैविंग बीन विटनेसिंग सीरियस हेल्थ हजार्ड्स, जहाँ पे कई बार एयर पोल्यूशन की वजह से खास करके जो ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो सर्ज हुए हैं, वो बढ़े हैं. There is a clear indication that we need to mitigate
the things, and we need to prioritize, not only mitigate, we need to prioritize our efforts towards reducing the carbon emission. जिस भी sources से हो, sources को हमें chunk out करना पड़ेगा, and we need to curb this part of the pollutions. Now कुछ studies की गई थी, I mean related to Delhi. दिल्ली की population pollutions को देखते हुए, it's a world वर्स्ट कैपिटल में अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है वर्ल्ड में. इट्स नॉट ओनली इंडिया सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और भी ऐसे शहर इंडिया में जो पोल्यूटेड है दिल्ली से, बट अगर वर्ल्ड कैपिटल में बात करें तो दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. नाउ कुछ स्टडीज हैं बाय द अर्बन इमिशन सेंटरिंग. दे हैव सेड दैट नोटेबल सोर्सेज फॉर द अर्बन स्मॉग एंड 2.5 and PM 10 which is causing the major pollution region. Now, these three pollutants are actually predominantly distributing the part of transport and construction sector as well. ऐसा नहीं है सिर्फ व्हीकल से होती है, ट्रांसपोर्टेशन से भी, और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वहाँ से भी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एक्चुअली एटमॉस्फेयर में आती है. Now, increase in the truck fleet, we have seen that almost 9 lakh जो trucks है वो actual में functions करती हैं, and 70 lakhs are there in the fleet, right? The trucks are over 2 trillion and they travel along, because इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ट्रक्स के थ्रू ही की जाती है. Now these trucks consume more than 1/4 of the Indian oil that is being imported, और ये contribute करती है 90% of the road CO2 emission. This is a factual important data. मेंस में आप इस तरह के पॉइंट जरूर कोट करें. Now with the expanding road network, the rate of truck fleet need to be expected to rise. तो हमें इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द ओवरऑल 2.5 पर्टिकुलर मैटर इन द एनवायरमेंट. नाउ किस तरह से इंडियन इलेक्ट्रिफाइड रेल फ्लीट ट्रांसपोर्ट इसमें मदद कर सकती है? इंडिया हैज सक्सेसफुली सीन दैट अबाउट 20% ऑफ द रेल फ्लीट आर देयर थ्रू ट्रांसपोर्टेशंस, एंड दिस एड्रेस ओनली फ्रैक्शंस ऑफ कंट्री टोटल फ्लीट, राइट. तो जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो ईवीज हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए, ताकि ये 6% ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपफ्रंट कॉस्ट में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस की वजह से भी, इनको भी हेल्प मिलेगी. गवर्नमेंट हैज एक्चुअली कम अप विद द कमेंडेबल एफर्ट, जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बस की बात की है. कुछ शहर ऐसे हैं लाइक सिटी लाइक दिल्ली, देन वी हैव सिटी लाइक इवन पुणे में भी है, एंड इवन बेंगलुरु. सो दीज आर द सिटी वेयर एक्चुअली द EV आर इन फुल फंक्शंस, राइट. तो इलेक्ट्रिफिकेशन से बहुत हद तक एग्रीगेटर्स को मदद मिलेगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी हेल्प मिलेगी, और अल्टीमेटली जो एनवायरनमेंट है वहाँ से CO2 की एमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगे. Now, if you look at the part of fleet benefits, अगर देखिए किस तरह से ये रिड्यूस कर सकती है, so these are the data that you can check that how the actual part of the electric vehicles can reduce a less of CO2, that is 2.817. So 2187, these are the data. और अगर गैस ऑन पाइल की बात करें तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हाई है. Now, what is the need of the hour? First and foremost, we need at least the trucks. E-trucks की ज़रूरत है भी, जिस तरह से E-buses एक्चुअल ऑपरेशनल्स हैं, उसी तर्ज पे हमें E-trucks की ज़रूरत पड़ेगी. And by 2050, we need to cut down with all diesel and petrols, right? However, जो projected trucks fleet है वो 1.7 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी by 2050, which will accelerate the part of E-trucks transition in the country. And even some projects are also in the pipeline. तो जो कुछ खास करके अगर फाइनेंस की बात करें, द फाइनेंस पार्ट इज अ मेजर चंक्स हियर. 6 rupees for every public utility that is required, and this is the need of the hour that government should put in capital to ensure that we are building the EV infrastructure as well. And to avert the part of 50% of electric penetration, और इंडिया के जो नेट जीरो एमिशंस की टारगेट है 2070 के लिए, उसको अचीव करने में भी ये सारी इंपॉर्टेंट एफर्ट्स होगी जो इंडिया को इस टारगेट को मीट करने में हेल्प करेगी. Now, to conclude the fact, I mean, the establishment of the corridors essentially required for this will actually be acting as a catalyst in this context, and designing the part of expressway, national highway जो कि green freight corridors पे काम करेंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा helpful होंगी trucks, travelers, commuters के लिए. Now, the catalyst of the trucks electrifications will act as a innovative, जहाँ पे incentivize की जाएगी charging infrastructure को. तो infrastructure develop करने में government actually PPP मॉडल पे भी काम कर सकती है. उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा मिल सकता है, एंड स्टैब्लिशिंग अ फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट व्हिच विल एक्चुअली हेल्प द पार्ट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द EV इकोसिस्टम. एंड दिस मेजर आर क्रूशियल टू अचीव द नेसेसरी ब्रेक थ्रू, जहाँ पे ट्रांजिशंस होंगी इलेक्ट्रिक बसेस की. नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक बसेस व्हिच इज ऑलरेडी इन फंक्शंस,
We will have electric trucks that will be fully functional with the help of the government, with the help of triple P mode, and ultimately will reduce the overall CO2 emissions that is there, right? So this is how the things will actually work out. मूविंग अहेड विद द आंसर डिस्कशन फॉर यस्टरडे क्वेश्चंस, जो कल के सवाल है उसके पहले सवाल का करेक्ट ऑप्शंस बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. चेक करें आपने क्या करेक्ट ऑप्शन मार्क किया. सेकंड क्वेश्चन अबाउट द सिम स्वैप, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड आउट द स्टेटमेंट वन बाय वन. Moving ahead with the daily MCQs questions of the day. The first question is about the propane. आपको बताना है propane की कौन सी qualities हैं. This has been there in news and again important for prelims, upcoming prelims examination. अगर आप state PCS examination दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये relevant है. It's the odorless and gaseous of hydrocarbon. It contribute to the crude oil fraction distillations. The octane range is really low. So check out for the correct option. To participate in the question answer, आप question number 1 लिखें. उसके बाद अपना जो ऑप्शंस आपको करेक्ट लगता है उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. पार्टिसिपेट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज अबाउट द टेक्सटाइल. This is the Republic of Textile. This is something a part of Russia's federation. It's bordered with the Black Sea. So do check out for the correct option and write your answer in the comment section down below. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, queries about mock test series for the prelims, any interview related queries, part of admissions for the regular courses, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for stay connected and stay tuned for more informative videos. Thank you so much.